हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल सोशो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बीए सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बारे में कि शॉर्ट क्वेश्चंस कितने आने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आने हैं, इसके लिए आप सिलेबस का वीडियो ज़रूर देख लेना। उसमें सारा डिटेल में बताया गया है जो आपका सिलेबस है। नेम ऑफ द पेपर इज़ हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से लेके 1750 AD तक। जैसे आपका सिलेबस है, सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस, उसी तरह से ये क्वेश्चंस प्रिपेयर किए गए हैं। इसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड सिलेबस के वीडियो यहीं पे मिल जाएंगे। और कुछ सब्जेक्ट्स के पंजाबी और हिंदी मीडियम में भी बनाए जा रहे हैं। जैसे आपको ज़रूरत हो वो ज़रूर बता देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आपके मीडियम के अकॉर्डिंग ही ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ अपलोड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट है इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस। व्हेन वाज द सेकंड बैटल ऑफ तराइन फॉट, एंड देन इल्तुमिश बिलोंग टू विच ट्राइब, एंड देन विच पॉलिसी वाज अडॉप्टेड बाय बाल्बन टू स्ट्रेंथन हिज पोजीशन, एंड नेक्स्ट हु वाज मलिक काफर, एंड देन मोहम्मद बिन तुगलक स्ट्रक न्यू कॉइन्स इन विच मेटल, and then who was Ibn Battuta, and then who founded the Vijayanagar Empire, and next what was the political condition of Punjab on the eve of Babar's invasion, and next Barit, Jagir, Diwane Ala, and next write any two causes of the decline of Mughal Empire, and then what was the title of Shivaji, and next name any two saints of Sufism, and then who was Al-Biruni, and next first battle of Tehran, and then who was the ruler of Kannauj, and then name the two coins introduced by Iltutmish, and next what was Chalis, and then what was Diwan-i-Insha, and then write a name of two administrative reforms of Firoz Shah Tughlaq, and then who founded Vijayanagar Empire, and next who was the last ruler of Delhi Sultanate, and then name any two administrative reforms of Shah Suri, and next what was Mansabdari system, and next name any two saints of Sufism, and next write any two effects of Muhammad Gori invasion, and next what was Iqta system, and next write a note on Balban's early difficulties, and then what do you know about the circulation of token currency of Muhammad Tughlaq, and then who was the greatest ruler of Vijayanagar Empire, to which dynasty did he belong, and then write names of the rulers of Punjab and Mewar at the time of Babar's invasion, and next name any two battles fought by Shah Suri against Humayun, and then what were the functions of Chief Sardar and Chief Qazi, and then what do you know about the Mansabdari system, and next point out two demerits of the Jagirdari system, and next write two main objectives of the Deccan policy of Aurangzeb, and then name two foreign invaders responsible for the decline of Mughal Empire, and then when and between whom the Treaty of Purandar was signed, and next name two famous Sufi saints, and then mention four features of the Bhakti movement, and then when and between whom second battle of the Tarain was fought, what was the results, and next name two arch rivals of Qutbuddin Aibak, and then what do you know about Chalisa, and next by which name Minister of Military and Foreign Affairs were known under Alauddin Khilji, and next write two steps taken by Balban to check Mongol invasion, and next which department was the founded by Firoz Tughlaq to help the poor, and then name four kingdoms that existed in India on the eve of Babar's invasion, and next name two historians of Akbar's time, and then name four functionaries of a province under the Mughals, and then what do you know about Jat and Samar, and next what do you know about Patla and Kabiliyat, and next what was Chauth and Sardeshmukhi,
And then what was the name given to the central cabinet of Shivaji, and what was the prime minister known as? And next question, write 3 causes of Shivaji's success against the Mughals, and then name 4 Sufi silsilas that existed in India. And next question, write 2 objectives of Muhammad Ghori's invasion of India. स्टूडेंट्स इसी में से आपके लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं. इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, इनके नोट्स तैयार कर लेना. एंड नेक्स्ट है, नेम द रूलर हु शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली. एंड नेक्स्ट, हु वाज रजिया सुल्ताना. एंड नेक्स्ट, हु फाउंडेड खलजी डायनेस्टी एंड व्हेन. एंड नेक्स्ट, नेम 2 टाउन्स फाउंडेड बाय फिरोज शाह तुगलक. एंड नेक्स्ट, हु फाउंडेड विजयनगर किंगडम एंड व्हेन. Sorry. Name the autobiography of Babur and it's written in which language. Write 2 military reforms of Shesha Suri, and then who was Abul Fazl. And next, what do you know about Jagirdari crisis? And next, write 2 features of Mansabdari system, and then write 2 system of land revenue introduced by Akbar. And then write 4 causes of Shivaji's success against Mughals, and when was Shivaji's coronated, and name his capital also. And then write the names of 4 Sufi silsilas that existed in India, and then write the name of 2 slave commanders of Muhammad Ghori. And next, name 2 coins struck by Iltutmish, and then write 2 measures taken by Balban to prevent Mongol attacks. And next, what do you know about Khalji revolution, and who was Ibn Battuta. And next, name 2 dynasties that rules Vijayanagar empire. And next, name 4 kingdoms that ruled North India on eve of Babur's invasion. And next, when and between whom battle of Chausa was fought, and when and where Akbar's coronation ceremony took place. And then when did Nadir Shah attack India. And next, who were Sayyid brothers. And next, name 2 persons who influenced Shivaji. And then write 4 causes of Shivaji's success. And next, name 4 saints of Bhakti movement. And then write the names of 4 Sufi orders that existed in India. And next, between whom and in which year first battle of Tarin was fought. And next, which policy was undertaken by Balban. And then, what do you mean by Khalji revolution? And then define Zakat. And next, which 2 new cities were established by Firoz Shah Tughlaq. And next, who founded Vijayanagar empire. And next, who was the ruler of Punjab at the time of Babur's invasion. And next, write the name of Babur's autobiography and in which language it has been written. And then define Batai system. And next, write 2 merits of Jagirdari system. And write the names of Sayyid brothers, in which year and where Shivaji was born. And next, define Chath. And next question, Bhakti movement condemned which 4 social evils. And next, who wrote Geet Govind. And next, name the Turkish sultan who died while playing Choga. And next, mention 2 steps taken by Alauddin Khilji to strengthen his army. And then name the department set by Firoz Tughlaq to help the poor. And then, who was Brani? Mention the names of books written by him. And next, who founded Vijayanagar kingdom and when. And next, who was Rana Sanga. And then, when was first battle of Panipat fought, what was its result? A question repeat हो गया. And next, write 2 causes of Babur's success in India. And next, mention 2 battles in which Shesha Suri defeated Humayun. And then, who was Todermal. And then, what were the powers enjoyed by Nazism. And next, what do you know about Jagirdari crisis. And then, what do you mean by Sardesh Mukhi. स्टूडेंट्स, ये थे शॉर्ट क्वेश्चंस. आगे है लॉन्ग क्वेश्चंस. सॉरी, इसमें जैसे आपके सिलेबस में 4 यूनिट बनाए गए हैं, उसी तरह से ये भी यूनिट्स में डिवाइड किए गए हैं. हर एक यूनिट में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपको पेपर में आने हैं. ऐसे टाइप 18 मार्क्स का एक क्वेश्चन, और उसमें से 2 में से आपने एक करना है. मीन्स कि हर एक यूनिट में इंटरनल चॉइस होगी.
ये क्वेश्चंस उसी तरह से प्रिपेयर किए गए हैं जैसे कि फर्स्ट यूनिट, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस तरह से हैं। स्टूडेंट्स, आपका पेपर इन्हीं क्वेश्चन में से ही आना है, लेकिन ये ध्यान रखना है ये क्वेश्चंस मोल्ड करके पेपर में डाले जा सकते हैं, तो आपको समझना होगा कि उसका आंसर कैसे देना है। वैसे मैक्सिमम कोशिश की गई है, यहाँ भी मोल्ड करके क्वेश्चन जितने बन सकते थे बनाने की कोशिश यहाँ की गई है। कईयों के आंसर सेम हैं, जैसे ये है हाउ मुआजुद्दीन ऑफ गौर इस्टेब्लिश तुर्किश रूल इन इंडिया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ खिलजी सुल्तान्स and then write a detail about the consolidation of Turkish rule under Iltutmish, and then write a detailed note on the agrarian reforms of Alauddin Khilji, and next discuss administrative reforms and market reforms of Alauddin Khilji, and then give an account of Firoz Shah Tughlaq's administrative and economic reforms, and then what steps were taken by Balban to consolidate his power, and then discuss agrarian and market reforms of Alauddin Khilji. And next question, what measures were taken by Iltutmish for the consolidation of Delhi Sultanate, and then discuss administrative experiments of Muhammad Tughlaq and their impact, and then discuss the measures taken by Balban for the consolidation of Delhi Sultanate, and then write a detailed note on the agrarian land of market reforms of Alauddin Khilji, and then how Iltutmish consolidated the Delhi Sultanate, and then critically examine the personality of Muhammad bin Tughlaq on the basis of his administrative experiments. ये यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन थे। अब लॉन्ग क्वेश्चंस यूनिट सेकंड। स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके यूनिट के अकॉर्डिंग जैसे सिलेबस तैयार किया गया उसी के अकॉर्डिंग ही आने हैं। यूनिट सेकंड में है व्हाट टाइप of economic systems was prevalent in Vijayanagar Empire, and then how Shesha Suri established his rule in India, and then how Vijayanagar kingdom was established, and then why Babur succeeded in conquering India, and then write a detailed note on Babur's conquest of India and causes of his success, and then which administrative reforms were undertaken by Shesha Suri, and then write a note on the administration of Vijayanagar kingdom, and then discuss administrative achievements of Shesha Suri, and then write about political conditions of India on the eve of Babur's invasion, and then discuss administrative reforms of Shesha Suri, and then discuss political conditions of India on the eve of Babur's invasion, and then discuss the main features of the administration of Vijayanagar kingdom. ये यूनिट सेकंड के क्वेश्चन थे। अब यूनिट थर्ड, जिसमें है व्हाट टाइप ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द मुगल इन इंडिया, एंड देन व्हाट वाज मनसब, हाउ डिड इट सर्व द मुगल एम्पायर, एंड देन राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ द मुगल, एंड देन क्रिटिकली एनालाइज द मुगल लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ये क्वेश्चन ऊपर की तरह ही है, लेकिन इसमें क्रिटिसिज्म देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई मुगल एम्पायर वाज डिसइंटीग्रेटेड, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस इन डिटेल द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मुगल्स। स्टूडेंट्स, इसके अलावा आप सोशियोलॉजी के पूरे सिलेबस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेबस का वीडियो और पूरे सिलेबस के ही लेक्चर्स भी यहाँ अपलोड किए गए हैं आंसर्स के, तो वहाँ से आप अपना पेपर की तैयारी कर सकते हो। पूरे सिलेबस के सोशियोलॉजी के मिल जाएंगे और पंजाबी कंपलसरी के भी यहाँ पूरे वीडियो बनाए गए हैं पूरे सिलेबस के। बहुत इजी लैंग्वेज में वो क्वेश्चंस आपको समझाए गए हैं और स्लाइड्स बना के उनके पॉइंट्स, हेडिंग्स वगैरह भी दिए गए हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ औरंगजेब फॉर द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, एंड देन व्हाट डू यू नो अबाउट द मेन थ्योरीज ऑन द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, and then write a detailed note on the mansabdari system of the Mughals, and then discuss central and provincial administration of the Mughals, critically examine different theories regarding the downfall of Mughal empire, and then what was mansabdari system, write its salient features, and then write about the causes of the downfall of the Mughal empire। ये यूनिट थर्ड था। अब यूनिट फोर्थ में आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ ही मैप का क्वेश्चन होगा। ये दो होंगे, जैसे कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन कर सकते हो जहाँ मैप का क्वेश्चन जो दिया जाएगा
उसमें प्लेसेस फिल करने को बोला जाएगा, वो प्लेसेस फिल करनी है और साथ में कुछ के ऊपर नोट भी लिखने को बोला जाएगा। 2-2 नंबर का नोट होगा, जैसे 4 के ऊपर आपको नोट लिखने के लिए बोला जाएगा तो वो 8 मार्क्स का हो गया, और 5 के आपने प्लेसेस फिल करनी होंगी तो 10 मार्क्स उसके हो गए। इस तरह से 18 मार्क्स का ये मैप का क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से है, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शिवाजी and then what were the salient features of Bhakti movement, and then write a detailed note on the salient features of Bhakti movement। स्टूडेंट्स फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं, चाहे यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा होता तब भी ये आंसर सेम रहना था। एंड डिस्कस द राइज ऑफ द मराठास अंडर शिवाजी, and then how Shivaji established independent state, and then discuss the career and achievements of Shivaji, and then discuss the origin, growth and main features of Sufism in medieval India, and then on an outline map of the India mark 5 places and write explanatory note on any 4। ये प्लेसेस आपको फिल करने के लिए बोला जा सकता है, दिल्ली, चित्तौड़, जयपुर, पूना, लाहौर, आगरा, मथुरा, फतेहपुर सिकरी, उदयपुर, पानीपत, लखनऊ, अहमदनगर, सूरत, गोलकुंडा, बीजापुर, दौलताबाद। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।